Aseem Trivedi joins us on the News Hour tonight. And along with Aseem Trivedi, we have with us in the studio someone we greatly respect, Dr. Hemant Morparia of the Mumbai Mirror, one of India's best known cartoonists. Thank you very much, Doctor. Also with us, a very well-known man in the world of cartoon art is Neelab Banerjee, very well-known cartoonist from the Times of India. Thank you very much, Neelab. And thank you, Aseem. Congratulations on your release. Now, Aseem, sedition was bad. The whole idea of putting sedition charges against you was wrong. It is misplaced. ये बहुत बड़ी गलती थी by the government, right? So that part of the debate, there is no disagreement on that. I don't think anyone here, myself, Neelab Banerjee, Dr. Hemant Morparia, all of us believe that the idea of putting sedition charge against you was complete rubbish. My question to you was, do you have any views? Because a lot of people from the world of art and well-known cartoonists have had strong views about the way in which you put your thoughts across. In the way you expressed it, they felt it was a little crude. Maybe it could have been a little bit more sophisticated, a little bit more subtle. What do you think, Aseem? अर्नब जी, ये सारी की सारी बातें हम मंटो की कहानियों के संदर्भ में भी कह सकते हैं कि वो ज़रूरत से ज़्यादा बोल्ड थी, ज़रूरत से ज़्यादा प्रहार करती थी। और उस समय के जो साहित्यकार थे, जो प्रतिष्ठित साहित्यकार थे, वो भी कहते थे भाई कि इतनी तुम्हें जहरीली कहानी लिखने की क्या ज़रूरत है, इतनी बोल्ड कहानियाँ लिखने की क्या ज़रूरत है, खोल दो, ठंडा गोश्त, ऐसी कहानियाँ तुम क्यों लिखते हो। और वो लोग कहते थे कि गलत है, उन पर कई बार मुकदमे चले। पर मंटो का कहना था भाई कि ये मेरा तरीका है अपनी कहानी कहने का, तुम्हारा अपना तरीका है, मुझे अपने तरीके से कहानी लिखने दो, क्योंकि मुझे लगता है इस तरीके से मैं समाज की बुराइयों पर ज़्यादा बेहतर ढंग से प्रहार कर पाता हूँ। तो सवाल यही है कि ज़रूरी नहीं है कि सब लोग किसी की आर्ट से, किसी की कला से, किसी के साहित्य से और किसी के ढंग से सहमत हों। हम सबका अलग अलग ढंग है, तभी इस दुनिया में वैरायटी है। हम सब अलग अलग तरीक़ों पर, अलग अलग विचारों पर यकीन करते हैं, भरोसा करते हैं। ज़रूरी ये नहीं है कि हम किसी की बात से पूरी तरह सहमत हो जाएं, क्योंकि मैं भी बहुत लोगों की बात से सहमत नहीं हूं और बहुत लोग भी मेरी बात से सहमत नहीं है। पर ज़रूरी ये है कि मैं जिसकी बात से सहमत नहीं हूं, उसके मुंह पर टेप ना चिपका दूं, उसे जेल में बंद करने की बात ना कहूं, उससे उसके कहने का हक ना छीन लूं। अभिव्यक्ति की आज़ादी एक अलग बात है, हमें देनी होगी, और सहमति और असहमति एक अलग बात है। वो हमारे ऊपर निर्भर करती है कि हम सहमति दें या असहमत हों। और रही बात इसका कि जो और कार्टूनिस्टों की आलोचना, तो पहले भी हुआ है, पहले भी बहुत से मतलब अभी मंटो का उदाहरण दिया, बहुत से कहानीकार उनके काम से सहमत नहीं थे, पर इससे मंटो का काम जी नहीं। ये बात ये है, आपने जो बात कही है वो बात ठीक है, मगर मैं चाहता हूं कि आप आज डॉक्टर हेमंत मोरपारिया है और नीलब बैनर्जी है, जिनको आप जानते होंगे, वो काफ़ी रेस्पेक्टेड कार्टूनिस्ट है, वो कुछ कहना चाहते हैं, उनकी भी अपनी प्रतिक्रिया है। जैसे कि आज first of all, I'd like your reaction. They want to say something to you, Aseem, and I hope you listen to them. Dr. Morparia, what is your view? What would you say to Aseem? Congratulations to him, firstly, for his release, and also for the fact that he's got a huge, his cartoons have reached a huge number of people. But for that, he should actually thank the government, because if had the government not slapped the sedition charge, he would be an unnamed, virtually unknown, his cartoons not be seen. So the government is equally responsible for giving him publicity, and that his cartoons have reached a wider audience. Having said that, I would ask a simple question that, there is a difference between propaganda art and the art of cartooning. What we are seeing with him is a form of poster art, poster cartoons. Right now he may be the poster boy of cartooning, but his cartoons are not more than poster cartoons. Why do you say so? Well, he has one good quality which all cartoonists should have, which is anger, But the anger has to be modulated in a form which is interesting, which is pleasing, which is witty, which is humorous. None of that is there in any of his cartoons. They are virtually like a visual expression of verbal metaphors. Such as? Well, you call something, if you say something is crap or something, and you just draw that as crap, that's not a cartoon. That's not a cartoon. Aseem, this point of view is coming from Hemant Morparia. I also want to, before I take your reaction, let's also hear from Neelab Banerjee. Neelab Banerjee, I don't know if you've seen specifically the cartoons which have become controversial in this case. I have said it very openly, Aseem,
that I would not put those cartoons on this channel because I think some of those cross the limits of decency. Now, I would not put them out, but I want to know from Nilab Banerjee, what do you think of the cartoons Although I saw the themselves, Nilab? cartoons. Yes. And I have a question for Aseem on that. Let's forget sedition charges, but does he honestly feel that these cartoons were in good taste? And I'll refer to some particular cartoons like, I can mention it, like Kasab relieving himself on Constitution, Book of Constitution, or the gang rape cartoon particularly. Can Aseem explain, how would I explain these two cartoons to a college child of, let's say, 6th or 7th standard, and where he or she is taught that these are sacrosanct things, and rape in general is something which cannot happen in a civil society. It's illegal, it's a crime, it's again, and this metaphor, if it has been used as a cartoon to promote anything, is it right? That's my question to Aseem to begin with. Aseem, would you like to answer both Hemant and Nilab Banerjee? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा पहले अर्नब जी कि अगर आपको तय करना होता कि ये कार्टून आप लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे तो आप नहीं लगाते, बिल्कुल ठीक है। पर मैं फिर कहूँगा, इससे ये बात नहीं पता लगती है, इससे आपको ये अधिकार नहीं मिलता है कि आप मुझसे मेरा कार्टून बनाने का अधिकार छीन लेंगे या मुझ पर मुकदमा लगा देंगे। बहुत से लोग हैं जिन्हें आपका ये जो शो करने का अंदाज है नहीं पसंद है, कहते हैं आप तो बहुत एग्रेसिव रहते हैं, ओवर एग्रेसिव रहते हैं। कल को हो सकता है मैं न्यूज़ चैनल खोलूँ तो आपको वहाँ पे शो ना दूँ, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मैं आपको शो करने से कैसे रोक सकता हूँ? आई रेस्पेक्ट यू कि आपकी एक स्टाइल है और वो आपका ढंग है, मैं उसे एग्री या डिसएग्री कर सकता हूं, पर मैं ये कहूं कि आपको तो ऐसे डिबेट नहीं करना चाहिए, ये गलत तरीका है, जर्नलिज्म पे गलत असर पड़ता है, तो ये गलत होगा। तो पहली बात, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक अलग बात है, कार्टून आर्ट्स के बारे में हम बात करें वो एक अलग बात, जैसे नीलाब जी कर रहे हैं, माटवारिया जी कह रहे हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। कार्टून की जो आर्ट है, कार्टूनिंग है एज ए होल, उस बारे में हमें डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी के बारे में मैं फिर वही कहूंगा अर्नब जी। असीम, मैं वहीं आ रहा हूँ, सवाल मैं वहीं आ रहा हूँ। सवाल जो नीलम ने किया था आपसे, we have a right to disagree. First of all, let me tell you, we have a right to disagree. And I begin this show today by saying the sedition charge against you is rubbish. It's rubbish. It's a foolish person who has put the sedition charge against you. That person does not know the law. But you see, beyond all of this, at a superficial level, we now have to go deep. And the question which Nilab Banerjee is putting to you is that Aseem and Hemant Morparia also say, see, if you use metaphors like, like, I'm sorry to say this actually, like a terrorist relieving himself on the Constitution of India, or the gang rape, or the metaphor of gang rape. My question which Hemant Morparia is raising to you is, what will you do next? And where will you stop? I think that, and Hemant Morparia wants to follow up with one small counter question to that. Yes, Hemant Morparia, and then you can answer. Yeah. See, he's a young man. He's 25, I think. So I can understand. I kind of empathize with him. एक बार सुन लीजिए, फिर एक बार सुन लीजिए आसिम, एक बार सुन लीजिए, फिर नीलाब जी, तीनों लोग सवाल करते हैं। नहीं, एक बार सुन लीजिए, आप सब लोग बताइए। No, आसिम, just listen, तो आराम से हूँ। just listen, हर किसी का, just listen and then you can give your full point of view. Yeah. हर किसी का एक्सप्रेस करने का तरीका समय चाहिए होगा, अभी आप लोग बता दें। Sorry. No, yes, I will come back to you. Yes. No, everybody has a different way of expressing. That's fine. But I would like to, say to Aseem that, what will you do for an anchor? You see, when you shout, people don't listen to you for more than few seconds. But if you sing, people are drawn to your, let's say, Kabir sang his Vani, and people were attracted to it, and it's still alive today and relevant today. If this is your manner of expression, however angry you are, then nobody will hear you again and again. If you want, you can just. I want to put up one cartoon. I don't know if Aseem has seen it. You see, now, there is a cartoon here which Hemant Morparia has done today in the Mumbai Mirror. It's interesting. You just pull out a bit. It makes a pretty sensitive point, but it makes it with a little bit of subtlety. See, I'm more or less saying what he said, Yeah. And this is but he's doing it. You're doing it with some subtlety. No, this is kind of
if you will, you know, I said how a cartoon could be drawn. So what is your point to Asim? Because I'd like to My hear him point to him is that anger doesn't get you far if you are a cartoonist, if it is just raw anger. It has to be modulated with expression, it has to be laced with wit, it has to be kind of, you know, embellished, it has to be made, because nobody will listen to you after some So time. now let's hear Asim. Yes, Asim, would you like to respond to Hemant? And a finish is also required. मैं बोलूं अभी? Please go बहुत ahead, सारे Asim. सवाल I'll हो गए, come. मुझे माफ कीजिएगा, शायद मुझे माफ कीजिएगा, बहुत सवाल एक साथ हो गए तो शायद मैं कुछ चूक जाऊं, तो मुझे जो याद रहेंगे अभी वो मैं रिप्लाई करूंगा। पहली बात जो आपने कही थी कि आप मेरे कार्टून नहीं चलाते, उसका मैंने रिप्लाई कर दिया है। सेकेंड थिंग जो नीलाभ जी ने कहा था कि वो जो कार्टून में कैसे जस्टिफाई करता हूँ, एक वो गैंग रेप ऑफ मदर इंडिया वाला और दूसरा वो कसाब वाला। सब जो कसाब वाला कार्टून है वहाँ मैंने दिखाया है किस तरह एक टेररिस्ट को हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इंसल्ट करने दे रहे हैं। जब हम संवैधानिक प्रक्रिया से ये बात पारित कर चुके हैं, ये बात साबित कर चुके हैं, ये निर्णय आ चुका है उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए, सिर्फ वोट बैंक के लिए उसे डिले करके हम खुद अपने संविधान का अपमान कर रहे हैं। मैंने उसके नीचे लिखा है। नीलाभ कुछ कहना चाहते हैं आपसे? अर्नब जी, मैं नीलाभ जी बाद में कहिए, वरना मैं यहाँ क्या बेकार बैठा हुआ हूँ। मुझे सुनिए फिर कहिएगा, हम बारी बारी से कहें सुने तो अच्छा रहेगा। मेरी बातें आप सुने, आपकी बातें मैं सुनूं, कोई फायदा नहीं है। थैंक यू। आप कह लीजिए फिर। बिल्कुल अच्छी बात है, आपने बहुत देर तो बताया, अब मैं कह रहा हूं, उसके बाद आप फिर बताएंगे, और ये प्रक्रिया, यही तो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी। तो अभी मैं ये कहूंगा नीलाभ जी कि अभी एक कार्टून की बात हो रही थी, हेमंत जी का कोई कार्टून है, बहुत से कार्टून हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि मैं सबसे सहमत हूँ, जरूरी नहीं कि सब कार्टूनिस्ट मुझसे सहमत हो। गैंग रेप ऑफ मदर इंडिया, भाई साहब बात यह है कि मदर इंडिया कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया में नेहरू लिखते हैं कि मदर इंडिया इस धरती की जमीन नहीं है, भारत माता इस देश की धरती नहीं है, इस धरती के पेड़ नहीं है, इस धरती की नदियां नहीं है, भारत माता है हम और आप, इस देश की जनता भारत माता है, इसलिए इस जनता के साथ हो रहा अत्याचार भारत माता के साथ अत्याचार है। भगत सिंह ने एक बात कही थी नीलाभ जी, भगत सिंह ने एक बात कही थी कि जब बहनों को अपनी बात सुनानी हो तो आवाज तेज होनी चाहिए। वो सरकार नीलाभ जी जो हमारे सड़क पर उतरने से, हमारे भूखे रहने से, हमारे अनशन करने से किसी तरह से हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। भ्रष्टाचार असली रूप ले चुका है, हजारों करोड़ों के घोटाले हो गए। नीलाभ जी मुझे बोलने दीजिए, आपको सुनना होगा, क्योंकि मैंने आपको सुना है, आपको मुझे सुनना ही होगा, आपको सुनना होगा नीलाभ जी, मैं फिर आपको सुनूंगा, मुझे बात पूरी हो जाने दीजिए। भगत सिंह को क्या जरूरत थी उस दिन असेंबली के अंदर बम फोड़ने की? आप कह रहे हैं ना गाइए, गाने से लोग बात सुनते हैं, साउथ करने से बात नहीं सुनते हैं। भाई बम फोड़ने की क्या जरूरत थी? फिर चुपचाप वो पंपलेट उड़ा देते हैं, फिर क्या जरूरत थी? पहले बम फोड़ा फिर पंपलेट उड़ा, उससे तो किसी को मारना भी नहीं था। भाई साहब बात वही है, जब सरकार बहरी हो जाए तो हमें धमाका करना होता है, और मेरी बात सही है। बहुत सारे सवाल किए गए थे, मुझे बहुत सारे सवाल किए गए थे। पहले लेट मी आंसर ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस। मैं ये कहूंगा सर जी कि जब आप कहते हैं कि राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान मैं कर रहा हूं, तो मैं कहूंगा राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान तो देश कर रहा है, देश के नेता कर रहे हैं, देश के प्रशासक कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, will you please listen? You see, the point is this, Asim. You must understand this. मैं जो सारे सवाल सुने उनके जवाब मुझे देने दीजिए। Asim, will you listen to? सबने लगातार सवाल पूछे। Can Neelab say something to you? Can Neelab say something to you? You see, I'll tell you one thing. I'll tell you one thing. No, one second. You see, Asim, please understand that day on my program, day before yesterday, Mayank Gandhi was on my program. I can pull out now. I think Mayank Gandhi is sitting next to you, right? Mayank Gandhi is sitting next to you. Mayank Gandhi मेरे बगल में जी। आप मयंक गांधी को पूछिए जी कि हमने मयंक गांधी को पूछा था, I had shown him the cartoon and I said I'm not going to show it on the channel. I showed him the cartoon and I said on a scale of 0 to 10, where would you place this in terms of decency and indecency? If 0 is decent and 10 is indecent. You know what Mayank Gandhi said? Ask him. He said I would put it at 11. So the question. अरे अर्नब जी, आप गैंग्स ऑफ वासेपुर को डिसेंट मानते हैं कि इंडिसेंट मानते हैं? No, one second. I am telling you what Mayank Gandhi said. ये तय करने वाले आप या कोई क्या होता है? Arnab, are you asking me a question? Then please give me time to respond to you. Please go ahead. No, पब्लिक डोमेन में एक पब्लिक डिसेंसी भी होती है। Just one minute. I'm coming to you.